Hello, everyone. So, from today's lecture, we are going to start machine learning. Okay. So, what is this machine learning? And we have came so far in artificial intelligence and why it is important. What made this feel important? What's going on? What is this data science? What's happening to the world? Why they are switching towards automation? Doesn't we require people to work? Or we don't trust people that you are going to do something correct? And it's not the first thing, it's not for the first time that we are relying on the machine. We are relying on machine from past many years. Industrialization, okay, it occurred okay, in 18th centuries or something like that. So there was something rapid industrialization in America, then Europe, and so on, being spread to other parts of the world. There, they started using some, big, your machines, okay, productions, mechanical stuff, mechanical machines, something like that. They started doing the production. Okay, at that time also people were concerned, what will happen to our job? Industrialization came, industry set up, all machine came. Now the production will be done by the machine. People were concerned. What will happen to our job? Now also, in the world of artificial intelligence, people are concerned. What will happen to our job? Because now you are saying that we are making machine. Okay. And we want machines to do our task and produce the output. Okay. So, all these things, that means if I do talk about late 1950s or 60s, when computers were built. Okay, that means devices, electromechanical devices. Okay, huge setup in 1950s or 60s. The computer came and they were meant for doing simple computations at that time. Addition, subtraction, all these things were done by the computers at that time. Then what happened? Programming languages also came. Algol, Basic, Pascal, that means assembly level language programming came. Then C programming came. Okay, so programming language came. At the same time, technology was also improving. Okay, and the computers which were so much huge, those who were taking a complete room for their occupancy. Now with the advancement in the chip technology, chips, okay, VLSI, very large scale integration, okay, their size get reduced. Now you are available with the smartphones in your hand. That is also a computer. Smartphone is also a computer. Why? Whom you call as a computer? Whom you call as a computer? What is the definition of a computer? When we were a child, so there was one definition taught to us: something which take an input, okay, process it, and produce output is said to be a computer. Okay, but now the definition has been changed. I will say any device, any any device is said to be a computer if microprocessor chip is unable on it. यदि आपने, if you have inbuilt a chip on it and you have programmed that particular chip, okay, that will be a computer.
It doesn't matter ki we are seeing the desktop, that laptop, something. No, your mobile phone is also having a chip, okay, where the programming has been done, and OS, your Android operating system, has been installed over it. So obviously it's a computer. Okay, so it can be integrated indoor, window, anywhere. You can fit a chip, you can program it, that will behave as a computer. Okay, so all these things were happening, and scientists were working on continuously. Okay, what's next? Technology has been improving, and we are using these machines, this computer, for problem solving. Okay, why we build a machine? Sir, because we want to solve problems. And sir, machines are quick, because at the current scenario, we are having good resources in terms of memory and processing. So sir, we can rely on machine, and sir, machine can give us quick results. That is why sir, we trust on machine. एंड सर, ह्यूमंस पर ट्रस्ट करना सर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, क्यों? क्योंकि मे बी को आप जानते ही हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस यदि हों इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और वॉट एवर. ठीक है, और यहाँ हमने एक कंप्यूटिंग डिवाइस रखा है, वी आर हैविंग अ कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ओके, जो कि अफेक्ट करे. हाँ, इफ योर डिवाइस, मशीन यू हैव बिल्ड, इसमें आप सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, ओके, with good computing capabilities, it will going to give you the best results. Okay, only the thing is you have to take care of the maintenance. Okay, if you are doing on time, you are going to get the proper results. Fine. However, now the industries are thinking, why to invest on humans, why to pay salary. So that's what I'm saying, कि if you recruit any person, so you have to give salary, and you have to take care of all this kind of things in the organization. Okay, so it's better kindly use machine and make it intelligent. It will do all the task without any argument. Humans can do the argument, but machine can't do the argument. So it will sit quiet and do its work. So it's better to trust on machine rather than human. Okay, and getting good scores also. So, you know, machine learning and data science, what they are, the world is been relying on data. Data, sir, data is everywhere, sir. What is data? Sir, data is raw facts and figures. This is data. Okay, and I will be processing data to convert it into information. So data processing is information, something relevant. That's what I need to do. So, with the advent of machines and internet, when the internet came, right now also, because of internet only, we all are connected to each other. And we are having one of the participants, she's from Algeria. Okay, so from different countries, different cities, we all are connected via internet. So if internet is there, social media also came. Social media also came. So we started uploading our pictures, our status, and etc., etc., everything on social media and all different platforms. So data is continuously growing. It's keep on growing every second.
not only second, fraction of seconds, continuously growing. We're recording the data on different file format also. Excel file, Word file, presentation, different data is growing on continuously. Right now also our uh, class is going on, so obviously data has been there. Okay, so data is growing. Now the companies are thinking data is of humans. Okay, those who are using these machines, data is of humans, and companies want to sell their product to the humans. Okay, what we are going to do? So they started working over the data. They try to explore the insights. That's what I said. Processing of data and retrieving the information from it. So the companies are filtering this data and trying to explore the information out of it. This is called as data science. So data science is exploration of data to find hidden patterns inside it, how this data is related, what it is giving us, what information it convey. So once I get the information, once I get something related to you, I will start doing targeted marketing, or I will be doing any advertisement, something like that I will be doing over you. Once I get to know your interest, okay, definitely I will tune myself and I will do the work according to that. Okay, this is how the company does a business. And everywhere the data is going to tell something. We require exploration. There are many problems in the world, whether it is related to the healthcare, whether it is related to defense, whether it is related to education or any other industry. There are many problem domains. They are having data. We have to explore data, and we have to apply machine learning algorithms or techniques over it. Okay, we want to make the machine learned, so that next time we can feed any data inside them, so they will give the results or the predictions without human intervention. Okay, so data science, as I already told, exploration of data. That's it. I don't have any bookish languages or any internet language. I don't know anything like that. Science means exploration, to discover. Okay, just keep on going and discover what is present in the data. That is science. Okay, what is machine learning? Okay, what is machine learning? So I say machine. Okay, this is a machine. You have to make it learn. What is learning? What is learning? Learning means to understand what is present inside something which we should know. I want to learn. You came here to learn AI. So you want to know what is present inside AI. You want to learn the concepts which are present in AI. Okay, fine. So that's all the purposes. Similarly, I want machine to learn something. You will say, sir, machine will learn. Yes, machine will learn. Why not? If machine can do computation, machine can do all maths, why can't machine can learn? Yes, machine can learn. As you, as like you. So what we are going to do in machine is we are going to feed data to the machine. Okay, we are going to feed data to the machine. We are going to apply algorithms. What are algorithms? Algorithms are step by step solution of a particular problem. That is what we mean by algorithms in computer science. So we are going to feed data to the machine. We are going to apply algorithms to the machine over that data. Apply algorithms over that data.
in machine. This is called learning. This process is called learning. So, what is machine learning? Feeding data to the machine, applying algorithms over the data. This is called as learning without human intervention. I don't require any human here in between. Okay, machine will learn automatically. Just feed the data to it. We are available with the algorithm that will help to learn over the data. And once the machine get learned, trained, we called it as a trained मशीन लर्निंग ट्रेनिंग हो रही है उसकी डेटा पे तो कर क्या रहा होगा व्हाट इट इज डूइंग यू आर सेइंग सर you are feeding data to the machine, you are having algorithms, what actually was happening there. So in this process, in this process of learning, the thing is to identify patterns in the data. Okay, in the data, that means what will happen, what will happen after an event, then what's next, then what next. I am going to connect dot from dot. That's what I'm trying to understand. Connect dot by dot. Okay, I need to identify hidden patterns in the data. Okay, what does hidden patterns means? That means if today is happening something, what will happen tomorrow? So how I can decide what will happen tomorrow? So I will giving a data that will be historical data to the machine, that okay, I will give a machine data of 5 years. For example, I will give machine data of 5 years, ki on this particular day, past 5 years data I will supply to the machine, and I will mention that this is all things happened on this particular day from past 5 years. Now I will ask the machine, kindly tell what will happen next year. So what machine will gonna do? It will learn whatever been happened in the past 5 years. It will learn from the data. It will try to understand the pattern of happening of an event in the data. Once it is learned, I am available with the algorithm over which learning is going on. Okay, once this learning or training has been done, okay, I'm finished with that. Then I can use this trained machine learning model. I will say it as a model. Once the learning has been done, it will convert into a model. Okay, so I can use that model, trained model, learned model, to perform predictions. Now I can ask what will happen next year or what will happen after 2 years. It will give me the answer. That answer will be prediction, predicted answer. So from historical data, machine will learn, identify the patterns, and it will give you the results. Okay, now the thing is definition. You told that, sir, this is what machine learning is: feeding data, applying algorithms over the data without human intervention is called as machine learning. Machine learning comes under AI, artificial intelligence. So this domain, AI, is a big domain. Artificial intelligence. Machine learning is a subset of AI. Okay, machine learning comes under it. Fine. So what is AI? What is AI? Again, no bookish language I don't understand. No bookish definition. Artificial intelligence. Artificial, whom I am calling artificial? See, we people are real, na? हम तो इंसान हैं. We are real, na? So who is artificial? If we are real, machines are artificial. Okay, so my definition is making machine intelligent is called as artificial intelligence. That's it. This is my definition. Making machine intelligent. Now the question is, sir, how to make machine intelligent? That's what I was doing here.
What I was doing here, I'm feeding data to the machine. I'm applying algorithms over the data, and I'm asking machine to give me the prediction. If machine automatically give you some result without your interference, without your help, what is this? That means machine has become intelligent. See, there is one more thing. What is intelligence? Again, a question. How you define intelligence? We'll say, sir, intelligence is a capability of reasoning. Intelligence is a capability of problem solving. Intelligence is a capability of critical thinking. This all sum up to make a person intelligent. Same thing I want to feed into machine. So there are certain definitions. They will say artificial intelligence means I want to make a replica of humans. That would be the definition. Create same copy of humans in form of machines. This is called as artificial intelligence. Similarly, here also in machine, I'm trying to create a replica. Okay, those tasks which are done by the humans, I want machine to do it. By feeding data into it, applying algorithms, train it for some time over the data. Okay, and it will start giving you the results prediction. Only the drawback is the machine requires historical data for its training, and the predictions and all the results will be given according to the data which we have feed. So data is a treasure. Data is everything. The kind of data you feed into the machine, accordingly the results it will give. Okay, this is how we define the intelligence of a machine. No emotions, nothing in the machine. This is good also, this is bad also. Good means machine will not argue you, machine will not ask for salary, machine will not do any politics. Nothing machine will do. It will give you just answer. Just keep the maintenance. But humans, salary, politics, argument, everything, it they will also work, they will also give the results. I'm not saying that, because the question is now how in the next in this world, next AI is going to replace human. Yes, not only replace, it is doing the replacement because of such reasons. I'm getting the quick answers, correct answer, perfect answers. Okay, everywhere this AI setup has been installed. Okay, so definitely I don't require humans. Replacement. So what you have to do, you have to learn AI. Okay, you have to learn AI. You have to learn all these tools, technologies to keep yourself safe in this world. If you don't learn the upcoming technologies, how you can say what will happen after 5 to 10 years? What will happen? Who knows? So at least you have to keep updated. That's what is mandatory. And this is a data world where data is everywhere. So we have to tune ourselves according to the data. So that's why it's important. Okay, fine. This is what machine learning is. This is what artificial intelligence is. And this is what data science is. Huge scope in this particular field. Okay. And all research has been going on, work is going on. Fine. And why I'm concerning about the data? Why? Because data, as I said, it's been recording everywhere, every time it's going on. Whatever be the activities are doing, whatever be the activities are happening, obviously data is created. You did anything, data created. Okay, the thing is, preserve this data. Okay, and use it ahead to do some prediction, classification, whatever be the task you want to do over the data. If I'm having a data, I'm the richest person in the world. So whoever the CEOs of social media platforms, Instagram, Facebook, Twitter, they are having data. They are rich. Okay, fine. Because they know each and every activity of you. In fact, Google also.
It continuously tracking your activity. You don't know. You're using smartphone now. You don't know. Your all activities are recorded there. Your location, where you are going, what you are purchasing, what everything has been recorded there. Okay, and these companies are silently. There is actually privacy issue. These companies are silently tracking your data, and it is being kept in their databases. And you don't know this data will be sold to third party without your permission. That's what happening. So there is a privacy issue. Whatever you are searching over the internet, everything, it's keep on track. Okay, and later on I will utilize this data for purpose, as I already told. Okay, so the point is AI, machine learning, developing using algorithms, apply over the data and make machine to learn and produce the results. That's what the goal is. All these things are dependent upon maths. Maths. Because if you are going to use data will be having dimension. You are going to put these dimensions into some equations, and you are going to solve the equations to produce the result. तो डेटा है तो डायमेंशन है तो इक्वेशन यू हैव टू पुट इट इनसाइड, और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा, ये प्रिडिक्शन है. ओके, तो विदाउट मैथ्स नथिंग इज पॉसिबल. तो यहाँ पे डायमेंशन मीन्स क्या हुआ? हाँ, 1D 2D 3D डायमेंशन फीचर्स. अच्छा, ओके, फीचर्स प्रेजेंट इन अ डेटा सेट है, डेटा सेट है वो. ओके, दैट्स व्हाट इट मींस, फीचर्स, डायमेंशंस, variables, whatever you want to say you can. Okay, so I am going to use these dimensions, these features, and I will put it into machine learning algorithm for training purpose. And these dimensions will be consisting of numerical values. For example, if I say I am having two dimension x1, x2, and I am having y third variable, three variables, something like this. And I am saying x1 2, x2 3, y is, for example, let us say 15. Okay, so I will be defining some equations. For example, 2x1 plus 3x2 equal to y. Let us suppose something like this. Okay, make it as 13. Okay, fine. So I will put 2 here. So 2 into 2 is 4, plus 3 into 3 is 9. This will y. So 4 plus 9 is 13. Yeah, I got it. Mashed. So I need to put these values, these numerical values, into the equations. And these equations only are the ML algorithms. These equations are ML algorithms. For example, if I say linear regression is y equal to mx plus c. It's the equation of a line. So I need to put these values into such equations to produce the results. Okay. Yes. What is the simple definition of an algorithm? Arun sir, an algorithm means step by step solution of a particular problem. This is what algorithm mean. That's what we study in computer science, and it's the simplest of all, step by step solution of a problem. It's called as an algorithm. Okay, and in this algorithms there is one more subject which we do study in computer science, that is analysis and design of algorithms.
very important subject for computer science students. EDA, they call it as a EDA. And here we do calculate the computational complexity of an algorithm. That means how much time and how much space it will acquire to run on a machine. Okay, so to solve a problem, there could be different approach. Someone will use its own approach, someone will use another approach, its own approach. The deal is we have to preserve the resources. Okay, that's how we have to make algorithm. Okay, fine. Now, as I told here, that everything is mathematics. Okay, in machine learning and data science, if you're good in maths, you can make it. Two things are required: maths, obviously, to understand the basics, fundamentals. Second is a programming, Python. If you know these two things, you can win. Okay, fine. So let's talk about something related to the mathematics for data science and machine learning. Okay, so machine learning is a field that intersects statistics, probability, computer science, and algorithms. Everything. It's an intersection field. Machine learning concepts are also available in data science, though machine learning is a part of AI. So all these fields are present in intersection. Some parts are here, some parts are there. Okay, machine learning also intersects maths. It also intersects statistics. It also intersects your computer science, algorithms, everything. Okay, and and the point is, if we heard a name maths and statistics and probability, always now, always it will be something like, sir, trouble, because everyone wants to learn machine learning and data science, but they don't want to learn this math stuff and the statistical stuff. But it is important. Without these, nothing is possible. Okay, so there are many reasons why the mathematics of machine learning is important. Okay, I'm going to highlight some of them. Selecting right algorithm. You are available with the problem, you have to solve the problem with the help of machine learning. Which algorithm you have to select, how you are going to decide? As I already told, whatever be the algorithms here are present in machine learning and data science, all are maths, mathematical algorithms. पूरा maths लगी है उसमें. So if you know about the maths, then only you can decide which algorithm is good, better fitted. Okay, complexity, model complexity, number of parameter, number of features, all these things you have to take care of. Model complexity, time, training time, how much it will take, what will be the accuracy of the algorithm, of the model. If I am selecting algorithm A, the accuracy is 70%. If I'm selecting algorithm B, accuracy is 80%. So obviously, I will finalize with algorithm number B. As I told ना, a problem can be common. समस्या एक हो सकती है. उसको सॉल्व करने के देयर कुड बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. सो ए बी सॉल्व कर सकता है उसको, बी कैन ऑल्सो सॉल्व इट. If B is giving higher accuracy for solution, you are going to select B. Fine, that's it. तो ये बोल रहा है वो. So obviously you require, what is the math behind that algorithm? What is the approach that algorithm takes to solve a problem? That is important. Okay, so math is going to help in this particular thing. Choosing parameters, choosing features, all these things are यहाँ पे important. एक क्वेश्चन मतलब मेरा है कि Yes, please say. हेलो। हाँ Yes, सर, ask a एक question. चीज कि जैसे अभी मतलब बहुत सारे को देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मशीन लर्निंग का कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब वो अंधाधुंध एज ए ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स है. मल्टीपल एल्गोरिदम यस. को ओके ओके, रन फाइन. करते हैं फाइन फाइन, यस, अभिषेक. और जो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी होता है उसको पिक करते सिलेक्ट हैं। तो करते हैं, मान लीजिए बिल्कुल जैसे पिकअप करते हैं. आपको जितना एक्सपीरियंस है हम्म, तो उससे आपको जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर एनालिसिस के पास बाद मतलब इतना आइडिया लगता है क्या कि कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करना सही रहेगा ओके, मतलब
फाइन, ऐसा ओके। आइडिया हो जाता है क्या ओके, इसके इतना लिए? आइडिया हो जाता है क्या? द क्वेश्चन इज, सर देयर आर मेनी algorithms which are available in the market, and the point is machine learning algorithms are having a drawback. क्या ड्रॉबैक है? their drawback is they are black box. What do you mean by black box? Black box means you don't know what is happening inside. You don't know what is happening inside. How algorithm concluded to give such result, it will not explain. How it reached to a conclusion that this will be the answer, it will not tell. तभी इसके लिए आया है आगे एक्सप्लेनेबल एआई. आई होप यू हैव हर्ड द नेम समवेयर, एक्सप्लेनेबल एआई. ओके, तो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स होते हैं. ठीक है. हाउ दे गेट द रिजल्ट वो नहीं बताते. वो दे विल नॉट टेल how they got some such thing, what's maths happened inside, उनमें क्या करा उसने, they will not tell. बट रिजल्ट आ गया, यू गॉट द प्रेडिक्शन. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एमएलआर ब्लैक बॉक्स, और ये इसका ड्रॉबैक है. ऑल राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, ही आस्क्स हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड that which ml algorithm is better suited for this problem statement. ओके, अब आप वो कह रहा है कि सर आप तो बहुत समय से पढ़ा रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा इन सारी बातों का. ठीक है. तो अभिषेक एक्सपीरियंस से ही पढ़ा ही रहा हूं. पढ़ा के तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, एक्सपीरियंस से ही पढ़ा रहा हूं. ठीक. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस वी हैव टू एक्सप्लोर डेटा एक्सप्लोर डेटा एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन. और अच्छी बात हुई इसने क्वेश्चन पूछा मुझसे. तो द लाइन विच आई ऑलवेज से डेटा साइंस के लिए, एंड दैट इज, एनीवन एनीवन हु अंडरस्टैंड डेटा, जिसको भी डेटा समझ में आता है वही डेटा साइंटिस्ट है. एनीवन हु अंडरस्टैंड डेटा इज सेड टू बी अ डेटा साइंटिस्ट. अब इसकी जो भी कोई डेफिनेशन हो किताबी, मेरे को तो नहीं पता. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी द डेफिनेशन इज, अ पर्सन हु अंडरस्टैंड डेटा इज सेड टू बी अ साइंटिस्ट. तो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर कौन सी एल्गोरिथम लगानी है, हाउ यू कैन डिसाइड. सो इफ आई अंडरस्टैंड डेटा, अंडरस्टैंडिंग डेटा मतलब वो वाइफ नहीं है मेरी कि मैं उसको समझूं. अंडरस्टैंडिंग डेटा का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, सर हाउ इट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस, 2D स्पेस, 3D स्पेस, डायमेंशन पर वो कैसे मौजूद है. इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझोगे. You have to do a proper process to understand the data. What these process are? These process are, you will do data cleaning, you will do data pre-processing. ये इसी के अंदर आ गया, data cleaning, data pre-processing. You will do EDA, exploratory data analysis. You will do data visualization. ये सब करोगे. Once you do all these activities over the data, then you will understand how data is distributed, organized in a space. यहां ये करने के बाद हो सकता है अब आपको क्लू लग जाए दैट विच अल्गोरिदम. तो अल्गोरिदम का भी नॉलेज होना चाहिए, व्हाट एन अल्गोरिदम डू. डेटा का भी नॉलेज होना चाहिए कि हाउ डेटा इज प्रेजेंट. वंस यू हैव अ नॉलेज ऑफ दीज टू, देन यू कैन डिसाइड that what algorithm should be better here to apply, and we can get the result. उसके बावजूद भी हो सकता है आपकी थ्योरी फेल हो जाए. वाई? वाई? इसलिए ब्लैक बॉक्स. हाउ एन algorithm अप्रोच टू अ रिजल्ट वो नहीं बताएगा. ठीक है. बट हाँ, we do the assumptions. Okay.
कि this algorithm is better suited, we can apply the algorithm and we can get the result. लेकिन आप जैसे एक सेकंड सर, यहाँ पे जैसे आप ब्लैक बॉक्स बोल रहे हैं, लेकिन जैसे अभी आपने लीनियर हाँ रिग्रेशन का हाँ, प्रॉब्लम लेकिन स्टेटमेंट रिग्रेशन दिया, का तो आई गिव एन आपने जो एग्जांपल। हम्म। तो हम्म। ट्रेनिंग के बाद जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन वो बनाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इक्वल टू एम तो एक्स प्लस अब सी। तो हम जान रहे हैं ना कि कोई भी इनपुट डेटा के लिए वो हम्म। उसी इक्वेशन पे उस डेटा को फीड करके आउटपुट देगा। तो देगा। इस केस में जैसे ब्लैक ब्लैक बॉक्स कैसे हुआ सर? इसमें तो हम जान रहे हैं कि मतलब उसका इक्वेशन क्या है, उसी के बेसिस पे ये रिजल्ट दे रहा है। देखिए, इक्वेशन इज अ बेसिस टू नो अबाउट एन algorithm, टू नो अबाउट एन algorithm। एक बेस है, बेसिस है। मैंने क्या बोला था, अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। ठीक है। वो कैसे कंक्लूड करा, आपने बोला कि सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड सर इफ वी नो m, x एंड c, वी पुट दिस इन द इक्वेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। मिल गया मुझे, तो ये ब्लैक बॉक्स कहां से हो गया सर, मेरे को तो पता ही है ना, व्हाट इज m, व्हाट इज x, व्हाट इज c, आई एम पुटिंग देयर। तो भाई बात ये है अभिषेक, यहां यहां जो मैटर है ना वो x और y का तो है ही नहीं, जो कि नोन है तुम्हें इन अ डेटा। यदि आपने बात करी मुझसे लीनियर रिग्रेशन की, लीनियर इक्वेशन की आपने बात करी मुझे, ठीक है, तो लेट मी टेल यू, इन अ डेटा यू आर अवेलेबल विथ एक्स जो कि फीचर्स होते हैं, और वाई जो कि टारगेट होता है। ठीक है, ये चाहिए ना तुम्हें, वाई चाहिए, एंड यू आर हैविंग ए इक्वेशन एम एक्स प्लस सी। तो एक्स आपको नोन है, एक्स इज नोन टू यू। ठीक है, वाई आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, एम एम। एंड सी, इसका कैलकुलेशन होना है। ठीक है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना है आपको कि क्या होंगे। ये मतलब ट्रेनिंग से डिसाइड हाँ, करेगा वो, ट्रेनिंग से डिसाइड मतलब होगा भाई, इट विल बी डिसाइडेड अंडर ट्रेनिंग। और दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन द अल्गोरिथम्स, जब मैं पढ़ाऊंगा एक एक को, ट्रेनिंग से डिसाइड होगा, अभी कहीं कुछ नहीं पता, आई डोंट नो द काइंड ऑफ डेटा आई एम गोइंग टू फीड इट। ट्रेनिंग होगा, एम और सी की वैल्यूज इट विल कैलकुलेट इटरेटिवली, नॉट इन अ वन गो, इटरेटिवली सॉल्व करेगा वो, एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, तब जाके वो वाई को प्रिडिक्ट करेगा। एंड इफ यू गिव एनी इनपुट एक्स, अब वो वहां पर एम और सी जो भी कैलकुलेट करे होंगे करस्पॉन्डिंगली उसका वाई वाई एज एन आउटपुट देगा वो। दैट्स व्हाट हैपनिंग। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड कि बेसिक्स आई नो द इक्वेशन ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ई लीनियर रिग्रेशन के लिए। बट एक चीज और बता दूं, यही इनफ नहीं है। लीनियर रिग्रेशन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब पता चलेगा कि ये तो सर अभी बहाना था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। देर इज मेनी थिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस सब लाइन के लिए एल्गोरिदम। कॉपी चेंज यस। करेगा। हाँ, द मैथ्स इज क्वाइट, मल्टीपल वेरिएबल्स हाँ हाँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी है, एंड द मैथ्स इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बट यू विल एंजॉय, ये 100% गारंटी मेरी। ठीक है, ऑल राइट। तो जब लर्निंग होगी आपके, आपको मजा आएगा। फाइन। तो अभी क्या हुआ, व्हाट हैपन, कि हमने कहा मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, एंड as the mass is required for you to understand, then only you can do something, you can decide something over it. Fine. Yes, any question, please let me know. Is domain knowledge necessary for ml? Yes sir, domain knowledge is also necessary. We say in data science domain is important. In case of data science domain knowledge is important. Okay, reason for domain knowledge is, for example, we are working in a field of healthcare. Okay, we are working in this particular field, so we should be knowing, for example, you are doing a project on breast cancer detection, breast cancer. So you should be knowing what is this breast cancer is, how it is been there, what are the different types of cancers, what are the features or the parameters which are responsible for this cancer. Okay, so definitely you should be in a knowledge,
गुड नॉलेज ऑफ डोमेन। आप कहीं फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, इफ आर वर्किंग इन फाइनेंस फील्ड, ओके, सो यू शुड बी नोइंग, जैसे स्टॉक मार्केट है, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द शेयर्स, उसकी इंफॉर्मेशन यू शुड बी नोइंग क्या होते हैं। तो आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, और यदि आपका प्रोजेक्ट है, ओके, सो यू शुड बी नोइंग द बेसिक्स रिलेटेड, देन ओनली यू कैन सिलेक्ट what are the relevant features that will be applied over the model to get the result। यदि हम कुछ भी रबिश रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट एनी रबिश इन द मॉडल, ओके, इट विल नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देने वाला। ओके, सो वी हैव टू नो द डोमेन, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, वेदर एमएल वेदर डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए तो बोला जाता है एमएल उसका पार्ट है, ऑब्वियसली से इंटरसेक्ट कर रहा है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस थिंग। ओके, फाइन। नाउ, ओके, सर एक क्वेश्चन था। हाँ, यस प्लीज से। सर जो फीचर्स तो हो गए वेरिएबल जो कि वेरिएबल्स, यस। डेटा में, राइट। हम्म, और टारगेट। हाँ, टारगेट हो गया, टारगेट हो गया वाई, जस्ट टारगेट हो गया, दिस इज माई टारगेट एंड दीज ऑल आर माई फीचर्स। नाउ टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नहीं, मेरा पूछना ये था कि अगर जो फीचर्स हैं वो वेरिएबल को बोलते हैं, तो वाई जो टारगेट है वो क्या नाउ है? टारगेट वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल है भाई, वो भी टारगेट टारगेट वेरिएबल है वो, ओके। दैट इज सेट टू बी टारगेट वेरिएबल। ठीक है, दीज आर द फीचर्स, these are the dimensions, these are the variables, and this is a target variable। Okay, fine, cool। So what level of mathematics you require? I told that maths is important, but how much you have to learn, कितनी पढ़ाई करनी है मैथ्स की। और ऐसा इट्स नॉट न्यू टू यू, पढ़ चुके हो आप मैथ्स। ओके, लीनियर अलजेब्रा यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, स्कूल्स में पढ़ा है, आगे भी पढ़ा है आपने। ठीक है, सो लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ऑल दिस थिंग्स आपने पढ़ा है इन योर स्कूल्स मैथ्स में। सेम थिंग, बस थोड़ा सा हाई लेवल कहीं पर आपको नजर आएगा, इतना भी नहीं। ठीक है, उसको रिवाइज करना है हमें। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दें, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिकल टॉपिक्स विच रिक्वायर फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आप देखिएगा कि लीनियर अलजेब्रा जो है 35% का कंट्रीब्यूशन है उसका। लीनियर अलजेब्रा मीन्स व्हाट डू मीन बाय अलजेब्रा? अलजेब्रा मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर इक्वेशंस, यानी कि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, इट रिलेट्स टू द इक्वेशंस। ओके, तो आप ऑर्गेनाइज करेंगे कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स को, इक्वेशंस बनाएंगे, फाइन, वो अलजेब्रा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल दीज थिंग्स। और यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आएंगे वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के। ओके, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आई नीड टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, देन ओनली आई कैन सॉल्व देम। सो लीनियर अलजेब्रा या अलजेब्रा की बात करें, 35% कॉन्ट्रीब्यूशन, हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। यदि एमएल पढ़ना है तो आना चाहिए ये, और मैं पढ़ाऊंगा। 25% stands for the probability and the statistics again। तो 35 plus 25 60% तो इसी ने उठा लिया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और अलजेब्रा 60% इन्होंने ले लिया। देन 15% कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। खास करके इंटीजर का तो कम ही यूज होता है, डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, सो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग, कैलकुलस, डिफरेंशियल, इट्स इंपॉर्टेंट। तो 15 और जोड़ दो तो 75%। तो जिसको ये 75% आता है वो होशियार है। देन आई एम हैविंग अल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, इंफॉर्मेशन थ्योरी, आईटी, इंफॉर्मेशन थ्योरी, उसका भी 5 to 10% मान लो आप। ओके, तो 80-85% इनसे हो गया।
इतना आना चाहिए. Then only you can make up with the data science and machine learning. Okay, this is the distribution pie chart है ये. How much maths you require to learn data science and machine learning आना चाहिए. ठीक है. तो भाई बात ये है, लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या मिलेगा आपको? वेक्टर्स एंड द मैट्रिसेस. अब क्यों, व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट? आप ये क्वेश्चन आया सर, व्हाई वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड ये अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक. तो समझिए, यू आर हैविंग अ डेटा, यू आर हैविंग अ डेटा. ठीक. डेटा को इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, तो मैं बनाऊंगा एक पॉइंट स्पेस में. आई विल मेक अ पॉइंट इन अ स्पेस. ओके, लेट अस सपोज मेरा 2D स्पेस है. दिस इज 2D स्पेस. ओके, तो ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज आई एम सेइंग 2,3, यानी कि 2 जो है, ये जो 2 है, ये x कोऑर्डिनेट है एंड 3 y कोऑर्डिनेट है. तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो स्पेस में, 2D स्पेस में, हम रिप्रेजेंटिंग इस तरीके से होगा. ये मेरा डेटा है, डेटा पॉइंट है. आपके पास जब डेटा सेट आएगा ना, एक्सेल शीट वाला, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. ओके, ये वाई टारगेट होगा, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है. तो भाई मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल द एंट्रीज आर 2, 3, 4, 5 और टारगेट मान लो 1 है. ओके, सो ये x जो है, ये x1, x2, x3, x4, ये फीचर्स हैं या डायमेंशन हैं या वेरिएबल्स हैं? Independent, these जो are भी independent variables, whatever you want to say you can. Okay, and one more thing, let me complete this stuff. So 1, 2, 3, 4, I am having 4 dimensions. 4 dimensions है मेरे पास. Okay, that means 1, 2, 3 and 4, all dimensions are perpendicular to each other, and I'm representing a point in 4D, and this point will be 2, 3, 4, 5. जो भी इनकी वैल्यूज है ना, इनसे मिलकर ये पॉइंट बनेगा. जस्ट आस्क द क्वेश्चन, जो भी हो आपका, आस्क द क्वेश्चन if you are having anything. So whatever be the entries which are present in a data, these are the entries which are present in a data. I will make a point by creating that much number of dimension. Okay, and then I can make a vector. What is vector? Sir, magnitude and direction. Vector quantity is a quantity which is having magnitude and direction both. तो बना दिया ना ओरिजिन से, ये ओरिजिन है. ठीक है, दिस वाज द ओरिजिन, और इसको कनेक्ट कर दिया, ये लो वेक्टर. इसको यदि मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना हो, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस थिंग ये इन अ चीज मैट्रिक्स. जस्ट एक पॉइंट कि जैसे मान लीजिए ये डेटा पॉइंट है तो सर, हाँ इसको मतलब इसको वेक्टर मानने के पीछे का लॉजिक क्या है? स्केलर क्यों नहीं मान रहा है, मतलब वेक्टर हाँ ही हाँ. क्यों मान रहा है? ये चीज just पूछना अच्छा, चाह रहे हैं. देखिए क्या मतलब है. जैसे जनरल सिनेरियो में कि कोई भी डेटा है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास का इंफॉर्मेशन है हम्म बच्चे का, हम्म रोल नंबर है, नेम है, उसका मार्क्स है, एज हम्म है, ये सब है. हम्म. तो इसके पीछे मतलब इसको वेक्टर मानने का मतलब क्या है? इससे क्या फायदा हो रहा है हम लोग जो इसको वेक्टर मानता है? देखिए, वेक्टर मानने के कई फायदे हैं. ओके, आप इफ यू आर सेइंग कि डेटा में डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं. हियर आई एम अवेलेबल विद डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट फीचर्स. ओके, एंड इन दिस डायमेंशन, which I am taking in a space, I am locating a point. So where that point is present in a space,
तो भाई अभिषेक, आपको क्या बोला था मैंने? डेटा साइंस क्या होता है? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग हिडन पैटर्न्स इन द डेटा। पैटर्न कैसे निकालोगे? हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द डेटा, कि वो कहां पर मौजूद है। मुझे लोकेशन पता चलेगी तभी तो मैं पैटर्न बना पाऊंगा। समझ रहे हैं बात को? यदि मैं इसको हाँ तो सर, स्केलर ले लूंगा तो मैं पैटर्न कहां से बना पाऊंगा? आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। कैसे करूं रिलेशनशिप? कैसे आइडेंटिफाई करूं इसकी? इसकी मुझे लोकेशन तो पता हो। दूसरी बात, आपको यदि क्लासिफिकेशन करना हो, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू क्लासीफाई, ओके, तो आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल, दिस पॉइंट इज प्रेजेंट हियर, दिस पॉइंट इज प्रेजेंट हियर, हाउ आई विल से दिस पॉइंट बिलोंग्स टू क्लास ए एंड दिस पॉइंट बिलोंग्स टू क्लास बी? कैसे करोगे? हाउ? सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम सुना है ना आपने नाम, एसवीएम? हाँ हाँ, है ना? क्या करता है वो? इन सबको वेक्टर्स बोलता है। ऑल द डेटा पॉइंट्स आर वेक्टर्स। वेक्टर पॉइंट्स। तो भाई बिना वेक्टर के, बिना लोकेशन के आप बोलो सर सब स्केलर है, ये बात तो नहीं चलेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम डिफाइनिंग डायमेंशंस, these points are present in dimensions, obviously I need to locate them, करना पड़ेगा मुझे। तो सर, इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मतलब इसको वेक्टर मान लेने से मतलब मेरा काम आसान हो जा रहा है, इसलिए हम मान रहे हैं? मान लेने से आसान हो नहीं जा रहा है, मानना ही अच्छा, पड़ेगा। क्यों? अच्छा, क्योंकि मानना ही इसलिए पड़ेगा क्योंकि जी। स्पेस में डेटा पॉइंट वेयर इट इज अवेलेबल, उसको मुझे लोकेट तो सर, करना है, उसको मुझे इक्वेशंस में अलग अलग डायमेंशंस वेरिएबल्स के अंदर पुटअप करना है। तो लेकिन लोकेट मजबूरी में करने नहीं के लिए मान तो रहा कुछ मैं। कोडिंग। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर अज्यूमिंग, नहीं, अज्यूम वाली तो बात ही नहीं है। आई नॉट अज्यूमिंग दैट वेक्टर अज्यूम कर लो इसे ना, नॉट एट ऑल। इफ आई एम गोइंग टू से कि स्केलर है, तो स्केलर के ऊपर मैं क्या मैथ्स लगा पाऊंगा? कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ मैथ्स आई कैन अप्लाई ओवर ओवर मैथ्स? कुछ भी नहीं लगेगा भाई, स्केलर पे तो कोई मैथ्स नहीं लगेगी जब तक ये इसीलिए तो इसको वेक्टर मान रहे हैं ना, ताकि हाँ हम हाँ, लोग मैथ अरे से भाई इंप्लीमेंट हाँ, कर तभी सके मानना है इसको मुझे, ऊपर। तभी मुझे वेक्टर मानना क्या है? जब मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, उसकी लोकेशन की बात करूंगा, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी डिफाइंड इन अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा जब मैं इन सारी चीजों की बात करूंगा। ओके, और यही तो एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? जो विषय स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड। ओके, 50 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर 50 सिर्फ स्पीड थी, मैग्नीट्यूड था। ये किलोमीटर पर आवर आ गया साथ में, और बोल रहा है कि किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो भाई मैं बोलूंगा वेलोसिटी है इन दिस। सो आई एम गेटिंग मच मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, दैट इफ यू आर ट्रैवलिंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड, इन विच डायरेक्शन यू आर ट्रैवलिंग। सो मुझे पता चलेगा कि मेरा डेटा कहां पर है, पॉइंट कहां पर है, वेर इट इज प्रेजेंट। सो the location of point is very much important in data science. Okay, its location is imp, important, कहाँ है वो? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी है उस डेटा पॉइंट पर। आई नीड टू डू स्केलिंग, आई नीड टू डू ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देर आर मेनी मेनी थिंग्स आई नीड टू अप्लाई ओवर द डेटा पॉइंट, बहुत कुछ करना है। यदि मैं उसको स्केलर मतलब मान लूंगा, स्केलर क्वांटिटी, तो कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर। एंड ऑब्वियसली डेटा पॉइंट किसी एक फीचर का तो होगा, एज आई टोल्ड दैट आई एम अवेलेबल विद डिफरेंट फीचर्स। ओके, आई एम हैविंग डिफरेंट फीचर्स एंड विच आई अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपस में किसी का कोई लेना देना नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग फीचर x1, x2, x3, so x1, x2, x3 आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तभी मैंने कहा कि भैया x1 को ये बोल दो, x2 को ये बोल दो, x3 को ये बोल दो, 3D बना दो। एंड एक पॉइंट ले लो, 2 3 4 है, तो लेट अस टेक 2 3 4, ये ले लो, देर इज वन पॉइंट 2 3 4, और इसको ओरिजिन से कनेक्ट करो, ये लोकेशन है इसकी। दिस इज हाउ रिप्रेजेंटिंग अ डेटा पॉइंट इन अ 3D स्पेस। तो ये 3D है, और इसको जब मुझे मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करूंगा मैं? दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू। ये मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसका।
I will take x1, x2, x3 as three columns of a matrix, and I will put the value 2, 3, 4. That's it. Okay. That's how I'm going to put. एंड जो भी इसके रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स होंगे उनको आई विल पुट इट हियर 4 5 6 7 8 9 सबको मैट्रिक्स में रख दूंगा. ओके. तो वेक्टर ही होना क्यों चाहिए? वाई वेक्टर ही क्यों होना चाहिए? आई नीड टू अप्लाई द ऑपरेशंस एंड एवरी डेटा पॉइंट इज एसोसिएटेड विद इट्स डायमेंशन और फीचर. ओके. तो वट एवर बी द मैथ्स आई एम गोइंग टू अप्लाई, इक्वेशन कैसे बनेगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं. ओके. तो आई विल बी क्रिएटिंग एन इक्वेशन लाइक दिस y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन. ऐसे इक्वेशन बनाऊंगा मैं. तो ये बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, ये सब कोइफिशिएंट्स होंगे, एंड एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये सब वेरिएबल्स होंगे इंडिपेंडेंट, और y हो गया डिपेंडेंट. ओके. y डिपेंडेंट हो गया. अब यहां क्योंकि आई नीड टू अप्लाई द मेट्राइसिस पार्ट ओवर इट, वेक्टर पार्ट ओवर इट, आई नीड टू सॉल्व इट. तो भाई मुझे अज्यूम उसे वेक्टर, अज्यूम क्या बोल रहा हूं मैं आपके टर्म बात में आ गया. अज्यूम क्या, इसको वेक्टर ही बोलेंगे बिकॉज द डेटा पॉइंट इज हैविंग सम लोकेशन. आई नीड टू टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. तो जहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी भाई वेक्टर वाली बात आएगी. Where it is present, the question is where point is present in a space. ठीक है. डेटा पॉइंट है वो, आप उसको बोले कि रियल रियल एंटिटी है वो, रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो. वेयर इट इज प्रेजेंट. सो इफ यू आर टेकिंग अ डेटा यू हैव टू लोकेट इट. ओके. फॉर एग्जाम्पल वी आर इन सिटिंग इन अ रूम, 3D है. कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर है उसकी लोकेशन बताओगे तो उसको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करोगे. तो उसको ओरिजिन से मार्क करो ना. एक रेफरेंस तो होना ही चाहिए ना मुझे. यदि मैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करूंगा तो आई रिक्वायर अ रेफरेंस ना. कहां से करूंगा? ओरिजिन से तो करूंगा भाई, तभी वेक्टर है. यदि इंडिपेंडेंट ले लिया एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट तो उसको उसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? तो एवरीथिंग विल बी डन इन दिस पर्टिकुलर वे, तभी वेक्टर है वो. ऑलराइट. कूल. स्टॉप प्रेजेंटिंग.